Okay, so let me start now. Are you ready? Okay, so here is the first question for you. Yes, so here is the first question. Uh, so you have only 39 seconds. Yes, fast. Okay, so it is visible to all. Yes, beta. Okay, so 47% people have the right answer. Say, density is, what is density? Density is mass by volume. Now, mass means, one second. So, mass by volume, and mass is number of molecules into their molar mass divided by Avogadro's number, mass of each element into total number of molecules, and AQ. That is the A is edge length. Wait. Okay. So in this way, it is capital N into capital M over A cube into Na gram per centimeter cube. That's it. So it should be N into M. M is molar mass, and N naught is Avogadro's number. And then, so next question. So बेटा नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा करो, लाइव स्ट्रीम पे चले जाओ. आई विल शेयर द, जिसको भी नहीं दिख रहा है वो लाइव स्ट्रीम में देखो. अब क्या करें, लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल सही दिख रहा है. दोनों खोल लो साइड बाय साइड. आयरन जो है अल्फा फॉर्म crystallizes in a body centered cubic system with edge length 2.86 angstrom. So density of the iron is, so they, वो जो n into capital M लिखा था ना, n क्या था, number of atoms per unit cell, that is Z. So you can write that Z. मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो density equal to Z into capital M over A cube into Na.
ठीक है, A should be in centimeter, and you know capital M is atomic mass of iron, so that is 56, and it is BCC. So tell me number of atoms per unit cell. ओके, सो 40% जो है उन्होंने सही आंसर दिया है. सो लेट अस डिस्कस. बीसीसी है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आ गया बेटा 2, एंड मोलर मास कितना आ गया बेटा 56. ए जो है you know it is 2.86 angstrom, so 2.86 angstrom, so 2.86 into 10 raised to power minus 8 centimeter cube into Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23. So it is 2 into 56 divided by 2.86 cube 10 raised to power minus 24. 6.022 take it as 6 into 10 raised to power 23. Yes beta, I am live streaming it on the YouTube. ठीक है, इस पे आपको दिख जाएगा. केमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुरेश ठाकुर, है ना. तो 2 और ये हो गया 3, है ना, और ऊपर है 56 और नीचे क्या आया 3. 2.86 क्यूब इंटू 3 इंटू 10 रेज्ड पर माइनस 1. अब देखो आंसर देख के आपको करना है बेटा. मैं बोल रहा हूं कि आप ना साइमल्टेनियसली जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप YouTube आईडी खोल लो, क्योंकि YouTube आईडी में बिल्कुल सही दिख रहा है. मैं मेरे सामने खोल के रखा है, उसमें सब दिख रहा है. आई डोंट नो कि ये ऐप की दिक्कत हो सकती है. तो देखो 2.86 है ना. यस हनु चौधरी, 2.86 into 2.86 into 2.86 multiplied by 3. तो बेटा ये हो जाएगा 560 और डिवाइडेड बाय 70 में 56 over 7, so almost 8 अराउंड आ जाएगा, है ना. तो इसका मतलब 7.98 is the right option. So next, go to the next question, that is the question number 3. So this is the question for you. Next question for you. बेटा चार्जिंग केबल लेके आओ. चार्जिंग केबल. Addition of arsenic
to germanium makes the latter, क्या बनाएगा वो? If I add arsenic to germanium, आर्सेनिक को जर्मेनियम में ऐड करना है, एडिशन ऑफ आर्सेनिक टू जर्मेनियम, यस बेटा। गीतांजलि कुशवा वर्मा जी, बेटा केमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुरेश ठाकुर। तो बेटा जी एडिशन ऑफ आर्सेनिक, आर्सेनिक मींस वन इम्प्योरिटी। वैसे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ है ना, बट कोई इम्प्योरिटी ऐड करेंगे अगर हम, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है, कोई भी प्योर जिसमें कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। और अगर सिर्फ मेटल्स ही हो, मेटल का कोई भी, तो उसको मेटेलिक कंडक्टर बोलते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना। और अगर उसमें हम इंप्योरिटी ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड डोपिंग, तो उससे बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा बोलना नहीं। Which of the following statement is not true about NaCl crystal, NaCl structure? दो दो आवाज आ रही है, एक मिनट। दो दो आवाज तो नहीं आनी चाहिए। ओके बेटा, तो इसमें क्या है, NaCl टाइप क्रिस्टल है, तो यू नो NaCl टाइप क्रिस्टल में क्या होता है बेटा, Cl नेगेटिव आयन जो है दे फॉर्म FCC और CCP, मींस वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। और Na प्लस जो है दे ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मींस वो कहाँ होते हैं, एच सेंटर और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो हर Cl नेगेटिव जो है, पहले हर Na प्लस इज सराउंडिंग बाई 6 क्लोराइड आयन, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस इज 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इज आल्सो 6, मतलब इट इज 6:6, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट सेल, यू नो FCC है, तो कॉर्नर पे और फेस सेंटर्स पे होंगे। तो कॉर्नर पे क्या होता है, 8/8 + 6/2,
मतलब कितना हो जाएगा 4। सो Z इज 4 फॉर NaCl। तो Z 4 है। तो देखो Cl नेगेटिव आयंस FCC बनाते हैं, सही बात है। Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, राइट है। Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, राइट है। Cl नेगेटिव हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हाँ, नॉट ट्रू पूछा था ना। Cl नेगेटिव आयन FCC अरेंजमेंट बनाते हैं, वो भी तो राइट था। And each unit cell contains 4 NaCl molecules. That's also right. तो Cl नेगेटिव FCC अरेंजमेंट बनाता है। Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सही है। Each unit cell has 4 NaCl, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ओके। और जो Z है दैट इज 4, बट इसमें लिखा है Na प्लस हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, रॉन्ग, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6। दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। Next question on your screen. In a crystal of cesium chloride, जो nearest neighbor है of each cesium ion are. गीतांजलि, खुशबा, ठीक हुआ कुछ सिस्टम? अब तो नहीं आ रही दो आवाज। Is it okay? This is the link. Okay. So in a crystal of cesium chloride, nearest neighbors of each cesium ion are. तो देखो सीजियम में जो अगर अरेंजमेंट बनाऊं मैं, क्यूबिक सीजियम क्लोराइड जो है दैट हैज BCC क्रिस्टल, जिसमें जो Cl नेगेटिव आयंस हैं दे आर एट द कॉर्नर्स। Cl नेगेटिव आयन जो है दे आर एट द कॉर्नर्स, और सीजियम प्लस जो है दैट इज एट द बॉडी सेंटर। सेंटर में जो है वो सीजियम पॉजिटिव है और जो कॉर्नर पे हैं वो Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो ईच सीजियम पॉजिटिव जो है दैट इज इन टच विद ऑल द कॉर्नर एटम्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम का कितना हो जाएगा 8 और Cl नेगेटिव का 8। सो 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 8 क्लोराइड आयंस आएंगे बेटा। ठीक है बेटा, टिक तो आपको हाँ उसमें ही करना पड़ेगा, ऐप में ही टिक होगा, पर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने आपको बोला है। अदरवाइज ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल, इसलिए इसका जो Z होता है ना दैट इज 1 है। ये BCC बट Z इसका 1 होगा बेटा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्योंकि नंबर ऑफ सीजियम प्लस आयंस पर यूनिट सेल भी 1 होंगे, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन पर यूनिट सेल भी 1 होंगे, है ना। तो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल 1 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितेश क्लियर हुआ है?
सोल्यूशन नहीं दिखता है, मुझे तो क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। चलो, क्वेश्चन इज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A and B. This crystallizes in the cubic structure when atoms A are at the corners of the cube and atoms B जो हैं they are at the center of the body. तो simplest formula of the compound आपको find out करना है। तो बेटा कंपाउंड जो है A और B एलिमेंट से बनता है, A कॉर्नर पे है और B जो है बॉडी के सेंटर पे है। तो क्वेश्चन आपको नहीं आया, बहुत ही गलत बात है ये। देखो ए जो है दे आर एट द कॉर्नर्स, तो कॉर्नर पे हैं तो कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? 8, और ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो बेटा ए आएगा 1 और बी है बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं? 1। so इसका मतलब ए इज टू बी रेशियो क्या होगी? 1:1, एंड दैट्स वाई जो फॉर्मूला है ऑफ द कंपाउंड that is AB. Formula of the compound is AB. कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो AB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बटन, तो आई एम सॉरी अगर ऐसा है तो। क्वेश्चन नंबर 7, आप उसको आगे कर सकते हो बच्चा, टिक करके, फास्ट करके आगे कर सकते हो उसको। What type of crystal defect is indicated in the diagram below? Yes बेटा, इस डायग्राम में what type of crystal defect is indicated? You can write in the chat box. Those who are watching on the YouTube live, they can write the answer in the chat box. I will definitely reply them. And do subscribe my channel. Okay, so beta, equal number of cations and anions are missing from the regular site. See, here Na plus is missing, then Cl negative is missing, then what is missing? Na plus, Cl negative. Equal number of cations and anions are missing. Equal number of cations and anions are missing from the regular sites. So that's why it is Schottky defect. Okay, so this is question number 7. Now question number 8. For some crystals, radius ratio for a cation and anion is 0.5 to 5. So its coordination number will be. Its coordination number will be radius ratio rule. What is radius ratio?
रेडियस रेशियो क्या होती है? So radius ratio is, oh my god, only 38% people give the right answer. Beta, radius ratio is radius of cation to the radius of anion, and if it is less than 0.155, then its coordination number is, yes beta, wow, 0.155 to 0.225, then 0.225 to 0.414, 0.414 to 0.2732, and 0.732 to 1.00. Its coordination number is, yes, 0.732 to 1. It is 8, 6, 4, 3, and 2. Its arrangement is, void is linear, trigonal, planar, tetrahedral, octahedral, and cubic. Okay, so in this way it is 0.525, so it is in between 0.414 to 0.732. That's why it is 0.525. Next, and please beta, to join the test I will you just type, you will go to Noon Academy beta. It is on the Noon app. Next question. If the coordination number of calcium 2 plus in CaF2 is 8, then the coordination number of F negative ions would be. After the video, I will send the link. Okay, so coordination number of Ca2 plus in CaF2 is 8. So what is the coordination number of F negative? So keep in mind while doing this question, actually CaF2, it is given that calcium 2 plus is surrounded by 8 fluoride ions. That means 8 F negative ions. So obviously to make this compound electrically neutral, F negative is surrounded by 8 positive. So obviously how many calcium 2 plus? 4. That's why coordination number of fluoride ion is 4 and coordination number of calcium 2 plus is 8. So in CaF2 it is 8 is to 4. Coordination number is 8 is to 4. Done? So दो sounds आ रहा है. One second. कैसे दो sound आ रहा है भाई? Hello.
तो साउंड आने का नो साउंड तो कैसे आ सकता है बेटा? अभी भी दो साउंड आ रहा है? Okay, this is very interesting question from the solution. When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, then freezing point is raised, freezing point is lowered, freezing point does not change, boiling point does not change. Okay. मर्क्यूरिक आयोडाइड आपने ऐड कर दिया है इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कीप इन माइंड. ओके, सो बेटा मर्क्यूरिक आयोडाइड, it is HjI2. So when this mercuric iodide is added to Ki, it will give K2HgI4. So that means 1 HgI2, 2 K plus and 2 I negative. Total 5 ions, 5 particles combine to give 3 particles. That means there is a decrease in number of particles. From 5 it turns out to be 3 due to the combination, due to the formation of this complex. So that's why its freezing point is raised, because depression in freezing point is a colligative property. So as number of particles increases, freezing point is decreased. But here number of particles are decreased, so freezing point increases. Okay. Next question. Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. This law is called, very simple question. This is the basic definition of which law? I think everybody should be right in this question. Just write, beta, who are watching this live, just write in the chat box and then join Noon Academy to have the live session. बेटा क्वेश्चन है टोटल 20.
This is 11th. So this is obviously Rolle's law. Relative lowering of vapor pressure P naught A minus PA over P naught A equal to mole fraction of the solute. That is an application of Rolle's law. Question number 12. Vapor pressure will be lowest for, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. So more the number of particles, lesser is the vapor pressure. So vapor pressure is the lowest for the one which give maximum number of ions. So vapor pressure will be lowest for sugar is non-electrolyte, KCl will give 2 ions, copper nitrate will give 3 ions, silver nitrate will give 2 ions. Okay, so 46% will 40% or 46% will give right answer. 0.1 first case, second 0.2 because KCl will give 2 ions, copper nitrate will give 3 ions, so it is 0.3, and silver nitrate will give 2 ions, so 0.2. So in this way 0.3. Okay, so that's why third is the right answer. Colligative property of a solution depends on colligative property of a solution depends on किस पे डिपेंड करती है बेटा? I think I should give 20 seconds for that, but I have given 60 seconds. So colligative property of a solution depends on, it depends on the number of solute particles independent of the nature. So that means C option was correct. Liquid pair benzene and toluene shows so see benzene and toluene have same nature because this is benzene, this one is toluene, nature is same. So they form which type of solution? They form ideal solutions, so practically no deviation from Rolle's law. They form ideal solution. Benzene, toluene, chloroethane, bromoethane, chlorobenzene, bromobenzene. Likewise, the pairs which have same type of nature
they form ideal solutions and show no deviation from Raoult's law. Next, acetone is added to chloroform. Hydrogen bond is formed. See, this is acetone. They form hydrogen bond with the chloroform. So they show so A, B जो है that is stronger, and that's why it showed negative deviation from Raoult's law. So see, if 0.15 gram of a solute dissolved in 15 gram of solvent is boiled at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of the pure solvent, so what is the molecular weight of the substance? Molar elevation constant for the solvent is 2.16 degrees Celsius. So देखो weight of solute is 0.15 gram, weight of solvent is 15 gram, delta delta TB is 0.216 degrees Celsius and Kb is 2.16. So delta TB equal to Kb into M means W2 by M2 W1 into 1000. So M2 comes out to be delta TB, sorry, Kb into W2 into 1000 over delta TB into W1. So Kb है 2.16, W2 है 0.15 और ये 1000, डेल्टा TB जो है 0.216 into W1, that is 15. So see 2.16, 0.216, that is 0.1. So it is 150, 15,000. So 1500 over 15. So it comes out to be 100. That's it. Question number 17. Kf value for H2O is 1.86. Value of delta Tf for 0.1 molar solution of non-electrolyte.
Yes beta, just use the formula, nothing else. So delta TF is KFM, मतलब 1.86 into 0.1, that is 0.186. That's it. Third last question. Osmotic pressure of a 5% weight by volume solution of cane sugar at 150 degrees Celsius is. So what is 5% weight by volume sugar solution? Means 5 gram of sugar in 100 ml of solution. Temperature is also given, 150 degrees Celsius. 150 plus 273, 423 Kelvin. Yes beta. My family members are also very desperate to ask me when you are stopping this all, because they want to sleep. But anyhow, I have only 2 questions. Okay. Osmotic pressure of a 5% weight by volume solution. Everything I have written. So formula used is pi equal to, yes, what is the formula used? Because it is a non-electrolyte, so pi equal to CRT. And what is molecular weight of sugar? Molecular weight of sugar is C12H22O11. It is 342. So it is pi equal to CRT, because answer is in atmosphere. Pi is N2 by V in volume. If it is in volume, into 1000 RT. Weight over molecular weight into volume in ml into 1000 into R into T. So weight is 5, molecular weight is 342, volume 100 into 1000, R is 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole into 423. So that's it. So in this way you can calculate, because 423 0.8, 0.08, so that will 342 0.8 means 423 into 0.821, almost they cancel, so it is 5 atmosphere around, 5.078. Second last question for you. Alpha is degree of dissociation of sodium sulfate. The Van't Hoff factor I used for calculating the molecular mass is. I have given 90 seconds for this question. There are more than not 90, 120 seconds means 2 minutes, and this question is of less than that. You have sodium sulfate
sodium sulfate will give 2 Na plus and 1 SO4 2 negative. Means N for sodium sulfate is 3. Now sodium sulfate dissociate. So what is the relation? Just use it. Alpha is degree of dissociation. So relation is alpha equal to I minus 1 over N minus 1. That is I is equal to 1 plus N minus 1 alpha. That is 1 plus 3 minus 1 alpha. That is 1 plus 2 alpha. So it is 1 plus 2 alpha. So last question, much awaited question. When benzoic acid dissolves in benzene, the observed molecular mass is. Benzoic acid dissolved in benzene. See the solvent. Solvent is playing the role. When benzoic acid dissolve in benzene, benzoic acid dissolves in benzene, not in water. That is the trick. Very good, very good. You know, in non-polar solvent, benzene is associated through hydrogen bonding, and that's why it forms dimer. In water it dissociates, but in benzene it associates. Okay, that's why its molecular mass is double, that is 244. So that's it. So now I'm showing the result. Nancy Kumar is the number 1, Rajrishi Dikshit number 2, Patan N number 3. So Priya Gupta is number 4, Khushi is number 5, Utkarsh number 6, Vaibhav number 7, Yogita 8, Sharat Tripathi 9, Palak Shruti 10, Shruti 11, Manisha 12, Nikhil 13, Swapnil 14, Pallavi 15, Shubhi 16, Shashi Kumar 17, Kaira Pandey 18, Khushi Sharma 19, and Lavish Meena 20. That's it. Thank you so much to all of you. Bye bye. Have a great career ahead. Bye bye. And rate the session. Thank you so much.